Hello, hello, hello. Okay, guys, so we are back. Let me see. Okay, Chinchan, congrats, bro. Thank you, thank you, thank you. Let me check it out some settings so we can start with this live stream. I hope you guys can hear my voice. If not, please let me know in the comment section. So we'll try to fix that if there is any bug. Okay, guys, so we are back with another live stream, and as the title says, that we have completed our 50K subscribers. So, thank you, thank you, thank you so much for those who have subscribed to this channel and who were supporting me since the start. I don't know how much of you are from the start and how much of you are recently joining, but it doesn't matter as long as you guys are supporting me, it means a lot to me, and that's why I have decided to do this live stream, even though it was a very hectic day. Setup details, bro. Yeah, I'll plan a separate live stream or in video just to talk about our setup, and we can talk about that in today's live stream as well. I would like to showcase my computer details. Okay, but thank you so much, and please click on that like button of this stream because it's really important to boost this kind of a live stream and boost this. And if you are still watching this live stream and if you haven't subscribed yet, what the hell are you guys doing? I don't know. So please hit on that like button and subscribe button because my next target is 100K, and I know it's not really easy, but as long as you guys are there, it's not very difficult as well. Okay, so yeah, cartoon stories in Hindi, setup details, bro. Yes, we will provide setup details. Stick to this live stream. We'll try to do that. Other than that, if you guys have any queries, okay. So from last few days, even recently, I have posted one thing like movie reviews and all. Yes, I'm working on that. I'm just studying that how to do it without getting any copyright and stuff. I know this Steve Talks 01. I know you are waiting for that movie review video, but yes, there are a lot of things I need to learn just to avoid any copyright issues and all. I got my list. All I need to do is just find thumbnails, find some details about that, and then I'll create live stream or maybe video about the movie review. ब्रदर थोड़ी टिप्स दे दो, कोई आफ्टर इफेक्ट्स मेरे पीसी में स्मूथ नहीं चलता। ओके, सो अगर आपके पीसी में आफ्टर इफेक्ट्स स्मूथ नहीं चलता तो आपको ये देखना होगा कि आपके पीसी का ग्राफिक कार्ड कौन-सा है। ग्राफिक कार्ड आपका अच्छा होना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये। उसके बाद आपकी जो रैम्स है, वो ज़्यादा होनी चाहिए। लाइक मेरे पीसी में मैंने 64 जीबी की रैम्स लगाई है, इसलिए कभी मेरा पीसी थोड़ा स्मूथ चलता है। कभी-कभार ऑब्वियसली मेरा भी पीसी लैग करता है बिकॉज़ ऑफ सो मेनी स्टफ, बिकॉज़ ऑफ पावर सप्लाई इश्यूज़ एंड ऑल। बट
तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद आपके पीसी में अगर बहुत सारा स्टोरेज है आपके सी ड्राइव में, यानी केच में, तो आपको वो थोड़ा डिलीट करना पड़ेगा। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो हाउ टू क्लियर द केच, बिकॉज़ आई डोंट नो द प्रोसेस ऑफ दैट करंटली, बट जे व्हेनेवर आई ट्राई टू डू इट, आई मोस्टली डू दैट, ट्राई टू क्लियर द केच। ओके, सो CACHE, आप यूट्यूब पे कोई भी ट्यूटोरियल सर्च कर सकते हो, हाउ टू क्लियर द आफ्टर इफेक्ट केस, यू विल गेट द ट्यूटोरियल। ओके, राइजन 532 GB रैम, RTX 350 GB है। ओके, आई थिंक इतना तो इनफ है। सो मेरे पीसी में भी ऑलमोस्ट यही है। मैं मेरे पीसी का भी कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूँ, आप उस हिसाब से लेने का ट्राई करो। और तो देखो, अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो मोस्टली जब मुझे कोई ऐसा पीसी स्पेसिफिक इशू आता है, तो मैं सीधा चैट जीपीटी पे डाल देता हूँ कि भाई ये इशू है, इसका क्या प्रॉब्लम है। और ऑब्वियसली देयर आर आंसर्स, और मैं ट्राई करता हूँ कि उससे सॉर्ट आउट करूँ। ओके, सो या ऑल्सो आपकी और भी सवाल है तो बता देना, हम ट्राई करेंगे आंसर करने के लिए। ओके, सो बाय द वे, आज के ट्यूटोरियल में हम क्या करेंगे मुझे भी खुद नहीं पता, लेकिन मैंने यहाँ पे गूगल का लोगो ले रखा है, हम उसको एनिमेट करने का ट्राई करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली आपके पास अगर कुछ आपके सवाल हो तो आप मुझे वो भी पूछ सकते हो। एआई। दोस्तों, ये एआई जो सर्विस जोशी ने लिखा है, ये कोई ये नहीं है कि ये मुझसे सवाल पूछ रहा है। बेसिकली ये मेरा फ्रेंड है, और आज हमारे ग्रुप में थोड़ा इसको लेके मजाक चल रहा था, तो वो मजाक कर रहा है, उसको सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बाय द वे गाइस, जैसा कि आसिफ टॉक ने अभी कहा कि मैं मूवी रिकमेंडेशंस वाला एक वीडियो लेने वाला हूँ। तो आपने भी अगर कोई मूवीज़ और सीरीज़ देखी हो जो मुझे देखनी चाहिए, तो वो भी आप रिकमेंड कर सकते हो, मैं वो भी देख लूँगा। इफ़ यू हैव एनी गुड सजेशंस अबाउट मूवीज़ एंड ऑल, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। बाय द वे, इफ़ यू आर गाइस इनटू एनिमेशन एंड ऑल, तो आप को मैं रिकमेंड करूँगा, रिसेंटली महाअवतार परशुराम मोशन पोस्टर रिलीज़ हुआ है होम बाले फिल्म्स की तरफ से। तो उसमें वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बैकग्राउंड म्यूज़िक एंड ऑल वाज़ वेरी ऑसम। सो वो आप चेकआउट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे ऑब्वियसली नहीं लगा सकता। सर, यू कैन शेयर अ जोक विद व्हाट? जोक? तो अभी मैं वो क्या बोलूँ? वो जोक इतना खतरनाक है कि अगर मैं यहाँ पे बताऊँगा तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी मेरी पर्सनल लाइफ में। इसलिए मैं वो जोक नहीं बता सकता गाइस। लेकिन आज नहीं तो कल मैं बता ही दूंगा। अ, या फिर मैं थोड़ा सोचता हूँ कि उसको ट्वीक करके कैसे बताया जाए ताकि मैं प्रॉब्लम में ना आ जाऊँ। ठीक है। ऐसा मतलब कोई ये नहीं है कि बहुत यू नो क्या बोलते हैं, मतलब गंदा ऐसा जोक नहीं है, लेकिन वो किसी के बारे में है, और वो पर्सन थोड़ा हाई पोजीशन पे है वो। भाई सैस एनिमेशन सीख सकता हूँ मैं अपने पीसी पर। जोक नहीं कर रहा। नहीं नहीं, ऐसा कोई ये नहीं है, जोक नहीं। या अगर आपके पीसी का कॉन्फ़िगरेशन जो आपने मुझे बताया है वो अच्छा है, सैस एक्सप्लेनर वीडियो आप बना सकते हो।
लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि आपके पीसी का मतलब इतना इशू हो रहा है या ऑल, तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली जो 3D के जो इफ़ेक्ट्स है उसमें शायद आपको दिक्कत आ सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं थोड़ा आफ्टर इफ़ेक्ट का जो लेटेस्ट वर्ज़न है वो ओपन करने का ट्राई करता हूँ और देखता हूँ। वैसे ऐसे नहीं, मुझे अभी यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा ऑफिस का, तो वो मैं अभी नहीं करना चाहता। अ, हाँ, तो आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब 2.5D और 3D का होगा तो आपको दिक्कत आ सकती है। सो उसको आपको देखना पड़ेगा कि वो कैसे चल रहा है। अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मल जो टेक्स्ट एनिमेशन से खेल रहे हो या कुछ, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। बाय द वे रिसेंटली मैं भी एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जिसमें सेंस एक्सप्लेनर वीडियोस है, और जो मैं रिसेंटली कर रहा हूँ, और उसमें मैंने बिकॉज़ मैं भी उतना सेंस एक्सप्लेनर वीडियो में नहीं हूँ, मैं थोड़ा-सा ही ट्राई। अरे नहीं भाई, गोभी जी नहीं। नो, नो, इट्स नॉट अबाउट एनी पॉलिटिशियन एंड ऑल, इट्स जस्ट a person who is in my friend zone only. Okay, so yeah. सो रही बात सैस एक्सप्लेनर वीडियो की, सो यस रिसेंटली मैं भी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जिसमें मुझे सैस एक्सप्लेनर वीडियो 3D नहीं करना, बस एनिमेशन करना है और कैमरा 3D। हाँ, फिर आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत तो पीसी लैग होगा ही। आप कितना भी अच्छा उसे बनाने की कोशिश करो या, लेकिन सैस एक्सप्लेनर में ये दिक्कत तो आती है कि आप कोई भी 3D कैमरा ऐड करोगे तो लैग होगा, इन द सेंस पीसी थोड़ा स्लो चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि फाइल ही क्रैश हो जाएगी, हो सकती है, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत तो स्लो करना ही होगा। लेकिन थिंग इज़ कि आपको थोड़ा अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा या अपने आप को ना थोड़ा आदत लगानी पड़ेगी कि जब वो थोड़ा धीरे वर्क कर रहा है तो आपको ना उसकी धीरे-धीरे आदत हो जाएगी। ऐसा कोई भी पीसी नहीं है जिसमें आप बोलोगे कि अच्छा सब कुछ स्मूथ ही चल रहा है, ऐसा कोई भी पीसी एग्ज़िस्ट नहीं करता। हर एक पीसी में थोड़ा बहुत लैग होता ही है। इट्स जस्ट कि आपको वो काम इतना करना है, बार-बार करना है कि आपको थोड़ी-सी आदत लग जाए कि जब वो हल्का-सा लैग करेगा तो कैसे वर्कआउट करना है। ओके, हाय अभिषेक, हाउ आर यू? हाँ, सो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, वरना हाँ, बाय द वे जो सर्वेश है जिसने वो एआई वाला डाला था, वो मुझे पर्सनली मैसेज करके बोल रहा है लाइव पे मत बताओ सर जोक। दहशत देख रहे हो? बन जाएगा ना धीरे धीरे, भले चले, हाँ बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इट्स जस्ट कि आपको थोड़ा आदत लगानी पड़ेगी। इवन मैं भी कभी कभार एनिमेट करता हूँ तो बहुत बार ऐसे होता है कि पीसी स्लो चलता है, सो उसको इसका कोई ऑप्शन नहीं है। बाय द वे मैं कब से बड़बड़ी करते जा रहा हूँ, कुछ कर नहीं रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं थोड़ा बहुत एनिमेशन कर ही लेता हूँ। सर कैन यू टेल मी हाउ कैन आई डू पॉपअप एनिमेशन इन कैमरा शूटेड कॉज पॉपअप एनिमेशन इज नॉट ब्लेंडिंग विद माई सीन। पॉपअप एनिमेशन के लिए आई थिंक देर इज़ वन स्क्रिप्ट, आई डोंट नो दैट स्क्रिप्ट येट, बट मैं थोड़ा लिख के लेता हूँ यहाँ पे। एक स्क्रिप्ट होती है इसके लिए जो हमें पोजीशंस में डालनी होती है, वो हम मैं लिख के ले रहा हूँ यहाँ पे। मैं ट्राई करूँगा इसके ऊपर ट्यूटोरियल या फिर नेक्स्ट इसमें बताने के लिए। पॉपअप एनिमेशन स्क्रिप्ट, एक स्क्रिप्ट आती है पॉपअप एनिमेशन की। आप कोई भी एनिमेशन करते हो तो उसकी में डालना होता है वो स्क्रिप्ट। बार बार व्हाट्सएप बज रहा है मेरा। ओके, सो या बेसिकली आप जब उसका पोजीशन एनिमेशन या स्केलिंग एनिमेशन करते हो तब डालनी होती है। नहीं तो मैं जनरली यूज़ करता हूँ जब मुझे कोई स्क्रिप्ट यूज़ नहीं करनी होती। सो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने जो
स्केलिंग एनिमेशन है उससे ही खेलता हूँ। मैं सिंपली अपना शेप टूल बनाता हूँ, कंट्रोल अल्ट होम, अलाइन टैब, अलाइन इट हॉरिजॉन्टली, अलाइन वर्टिकली, स्केल 0 कर देता हूँ मैं। एक की फ्रेम, मैं जाता हूँ 20 फ्रेम या फिर 1 सेकेंड पे, इसे कर देता हूँ 100। ठीक है, समवेयर अराउंड दिस पॉइंट, let's make this 120, somewhere around at this point let's make this 90 और F9। ठीक है, तो ये तो ऐसे हो गया। इसे थोड़ा सा और ऐसे नहीं यहाँ पे लेके आओ, तो ऐसे हो गया। अब हल्का सा हमें ग्राफ एडजस्ट करना होता है, तो मैं इसे ऐसे एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, फिर जैसे ही ये यहाँ पे आएगा, इसे ऐसे, इसे ऐसे, इसे ऐसे और इसे ऐसे। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो मैं ऐसे, नो सर आई मीन इन वीडियो पॉप, डिलीट मार दी। और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसको। अच्छा, पॉपअप एनिमेशन इन वीडियो, वीडियो में तो मुझे नहीं पता, मैं एनिमेशन में करता हूँ, लेकिन मैं यूजुअली एनिमेशन कंपोज़र जो है, अभी तो ये 2022 वर्जन है तो इसमें नहीं चलेगा, बिकॉज मैं लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपना जो एंकर पॉइंट मूवर से जो ये पॉपअप एनिमेशन आता है, मैं ये यूज़ करता हूँ। अभी ये 2020 वाला है तो इसमें चलेगा नहीं, बिकॉज मुझे ऑफिस के लॉगिन से लॉगिन नहीं करना अभी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ये यूज़ करता हूँ। और वीडियो में अभी तक मैंने ब्लेंड नहीं किया है, बिकॉज मुझे अभी तक पर्सनली कभी ज़रूरत नहीं पड़ी है, सो मुझे उसके बारे में इतना नहीं पता। सो या, बिकॉज मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम मोशन ग्राफिक्स में ही रहता है, तो मुझे अभी तक वीडियोस में उतनी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी पॉपअप एनिमेशन यूज़ करने की। ब्लेंडिंग मोड चेंज करने के बाद भी ब्लेंड नहीं हो रहा। मुझे पर्सनली देखना पड़ेगा, आप अगर चाहो तो मुझे प्रोजेक्ट फाइल सेंड कर दो किसी भी लिंक में, अगर ड्राइव लिंक पे अगर आप डाल के दे सकते हो तो मुझे कि कमेंट सेक्शन में दे, डाल के दे दो कि ये ड्राइव लिंक है वो पॉपअप एनिमेशन की, मैं चेकआउट कर लूँगा कि क्या दिक्कत है। ऐसे मुझे टेक्स्ट में समझ में नहीं आएगा। ओके, सो चलो कुछ एनिमेशन करते हैं। ये मेरे पास गूगल का लोगो है, एज ऑलवेज जब मेरे पास कुछ नहीं होता है एनिमेट करने के लिए तो मैं गूगल का लोगो उठा लेता हूँ, बिकॉज मुझे पर्सनली ये लोगो बहुत पसंद है और इससे मैं बहुत कुछ चीज़ें कर सकता हूँ, तो मैं इसे उठा ले लेता हूँ। आई थिंक न्यू वाला बहुत सही चलता है और न्यू वाले में बहुत अच्छे फीचर्स भी हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब मुझे प्रोजेक्ट फाइल सेंड करनी होती है किसी को, तो मैं हर एक के पास लेटेस्ट वर्जन नहीं होता, तो मुझे पुराना 22 वर्जन यूज़ करना पड़ता है। लेकिन जब मेरे कोई बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें 3D रिक्वायरमेंट होती है या फ्रीलांस का काम होता है या ऑफिस का काम होता है, तब मैं लेटेस्ट वर्जन यूज़ करना प्रेफर करता हूँ। लेकिन जब मेरा यूट्यूब का कंटेंट होता है और मुझे किसी को प्रोजेक्ट फाइल सेंड करने होते हैं स्पेसिफिकली ऑन पेट्रियन, तो पुराना वर्जन यूज़ करना प्रेफरेबल रहता है। और ऐसा मुझे अभी तक कोई ग्लिच तो नहीं आया कि ओल्ड वर्जन अच्छा नहीं चल रहा है या नया वर्जन अच्छा ही नहीं चल रहा, सब अच्छा चल रहा है। Abhishek Best, congratulations for Frederick. Yes, thank you so much. By the way, click on this like button, guys, because we need to boost this stream to get to know with more peoples. So, चलो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं।
ओके, सो सी क्या कर सकते हैं, लेट्स डिलीट दिस नल ऑब्जेक्ट। हम इस सब को सिलेक्ट करके पी फॉर पोजीशन, सभी पोजीशंस को सिलेक्ट करके राइट क्लिक कैन चूज सेपरेट डायमेंशंस, one keyframe at x and one keyframe at y, around 1 second. Again create another keyframe at x and y, go to the start, go to the align tab, align it horizontally, align it vertically. Let's move this downwards somewhere in the middle. Let's bring this y position upward, go few frame forward and create another keyframe, and in the middle let's bring this again upward. Okay, in search option search for y, select those keyframe and hit F9, go to the graph. Let's select this by holding shift, move this handle over here and move this handle over here, select this and move this handle over here and move this handle over here, zoom in, select this, move another handle over here, another handle over here. सर एक यूट्यूब वीडियो है, लिंक भेजो। हाँ भेजो, लेकिन अभी तो मैं उस यहाँ पे तो नहीं देख सकता वो वीडियो, मैं बाद में देखूँगा। लेकिन आप कुछ होगा उसमें मुझे तो मैं देख बता दूंगा आपको, बिकॉज़ यहाँ पे देखूँगा तो कॉपीराइट के इश्यूज आ सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से हमने ये पॉपअप तो बना दिया। अब एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन, टू क्रिएट वन की फ्रेम हिट यू, go over here, create another keyframe, and at the start let's make this 0. Then press R for rotation to create one keyframe, hit U, go over here, let's select this, let's make this -1. We don't need to rotate this once. Let's select this, make this +1, select this, make this +1, select this and make this +1. हाँ ठीक है, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। Okay, so we got this, but this looks a little bit faster, so let's select all of those keyframes, and by holding alt let's bring this up to 20 frames only. Okay, so we will get a little bit faster. Let's bring this up to 1 second. Also enable the select all of them and enable the motion blur. Okay, and this animation to be one by one, so hit page down button 2 times, select these, and let's try to adjust them one by one. Okay, like that. Let's select all of this and press Ctrl Shift C, and let's call it as logo animation. Okay, now I'm going to press Ctrl Y to create one solid background and choose this blue color and hit OK. Now over here what I want is that there should be white color. Choose ellipse and choose white color, and by holding shift create one ellipse, press Ctrl Alt Home. Let's bring this align tab and bring this over here, and let's bring this downwards. Now let's select this, press P for position, let's bring this downwards, create one keyframe at start, go to around 20 seconds, and let's bring this Y position upward, go somewhere around over here, and let's bring this downwards. Okay, like that. Select those keyframe and hit F9. Then go to the graph, select this, and by holding shift move this over handle over here, then select this and move this handle over here. Okay, select this and let's try to bring this by holding alt, let's try to bring this up to this, so it will be a little bit faster. And when it's coming somewhere around like this, I'm going to press Ctrl Y to create one solid background, and let's bring this over here, and now select one ellipse, and by holding shift create one ellipse, and let's change the color of this one to red. Okay, let's make this fit. Let's select this,
And let's try to bring this anchor point over here. Press S. Let's increase the scale. Select this white solid. Press F4 and let's choose alpha inverted mask. Select this shape layer. Press S to create one keyframe. Go somewhere around over here and let's make this value 0. Okay, so we are gonna get something like this. Okay, like this. Now let's select this and hit F9. Then select the shape layer, press S, create one keyframe, go few frame forward and let's increase the size of this. Okay, let's select those keyframe and hit F9. Go to the graph, select this and by holding shift move this handle over here. Okay, like that. And select those last keyframe and let's move them a little bit forward. Also select these. Let's select this and bring this over here like that. Let's select all of them and enable the motion blur. And select this logo animation and bring this somewhere around at this point. Okay, like that. सर 2 सेकंड का पार्ट है, जरा देख के बताना, यूट्यूब पर मत देखना बट चेक करके बता दो, अभी पर काम कर रहा हूँ. ओके, लेट मी सी वेयर इज दैट. हाय ब्रो, मैंने वो वीडियो तो देखी है, आई थिंक 4 to 5 सेकेंड्स पे, लेकिन मुझे वहाँ पे ऐसे कोई ब्लेंड होता हुआ तो नहीं दिख रहा है कोई टेक्स्ट. आप उस शोरिल जो वर्ड लिखा है उस पे, उसके बारे में बोल रहे हो क्या, जो 1 सेकंड पे है, या फिर आप उस वर्ड के बारे में बोल रहे हो जो 5 सेकंड पे जो टेक्स्ट है 2025 एंड ऑल, आप उसके बारे में बोल रहे हो या जो शोरिल जो वर्ड है उस वीडियो में उसके बारे में बोल रहे हो? लेट मी नो. Let's go inside this. Now let's select your pen tool. Let's remove this fill, we don't need that. Let's see this animation first. We got this. Let's make this quad resolution. I think we don't need this solid. I think we are okay with this one only. Let's increase the scale of this. Let's go over here. Hello. Hello Chaitanya. Okay, from I want there should be animation like snake. So I'm going to bring this from here to here.
Let's go and choose red color for now, just to increase the size of this stroke, like that. Okay, then press Ctrl R to bring one line. It should touch the bottom, and we will select this last time, and it should touch the bottom as well. Okay, let's go to the fit. Let's go to the add menu and go to the add, and we are going to choose round corners. Go to the round corners and let's increase these round corners. Okay, I think this much looks good to me. एक मिनट रुको, कमेंट देखने दो मुझे। सर 4 सेकंड पर स्टॉप कर देखो, जो वो रील टाइप आ रहा है उसके अंदर भी पॉपअप एनिमेशन हो रहा है। अच्छा, आई थिंक उसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन पे रखा होगा, या फिर स्क्रीन या फिर मल्टीप्लाई पे रखा होगा उन्होंने, और उसकी ओपेसिटी कम कर रखी होगी। ये तो दो ही ऑप्शंस मुझे पता है, और स्क्रीन मल्टीप्लाई या फिर ओवरले। ओवरले तो मुझे पर्सनली नहीं लगता, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन पे लगा होगा, या और कर्व्स और ब्राइटनेस की मदद से या फिर लोमेट्रिक कलर इफेक्ट की मदद से उसको एडजस्ट किया गया है। तो ये दो ऑप्शंस मुझे लग रहे हैं। उसके अलावा तो मुझे कुछ नहीं लग रहा उसमें, जो आप बता रहे हो। तो आप ये ब्लेंडिंग मोड ट्राई करके रखो, देखो, या फिर आपको ओपेसिटी के साथ थोड़ा खेलना होगा, या फिर जो कर्व्स ऑप्शंस होते हैं उनके साथ आपको खेलना होगा। सो या दैट्स द ओनली वे। ओके, सो प्रेस G, लेट्स ब्रिंग दिस डाउनवर्ड्स, let's try to bring this over here, let's try to bring this over here. Okay, now after that go to the add menu. First of all, let's select this in search option, search for cap, and make sure to choose round. I think butt cap is enough. Do not choose round cap for this one. And then go to the add menu, and we are going to choose trim path. Then go to the trim path. Let's make this end value to somewhere around like this. Okay, let's make this 7, or let's say 6.1, or let's say 6.3. Let's create one keyframe at end. Hit U. Let's see where this animation is going, somewhere around at this point. Let's select this, and let's go few frame forward, like 3.5, and let's make this end value 100. Then go over to somewhere around at this point. Let's go to the add menu. Let's go somewhere around at this point. Create over here. Let's create one keyframe at start. Go few frame forward, and let's make this value 100. Okay, like that. I think we should not choose 100, but somewhere around like this would be enough. Okay, like that. So now first we got this, and let's select all of this, and let's hit F9 over here. Okay, like this. Now somewhere around at this point I'm going to select this one, for example this L over here, and press Ctrl Shift D to split this. Let's bring this at the top, and at the end over here, somewhere around at this point, let's hit U. Let's remove the scale, rotation, as well as X and Y position keyframes. Let's bring this from here to here, like that. Okay, and move this over here. Now let's go to the start, and let's select this stroke and go to the stroke color options, and with the help of this picker, pick up this green color. Okay, like that. So we are gonna get something like that. And when this is coming over here, I want this stroke shouldn't be visible, so press Ctrl Shift D to delete it, like that.
वो opacity तो भूल ही गया था. Okay, thank you. Okay, somewhere around like that. And then at this point, I want my stroke should start to get appear. So I'll bring this over here. So if you check it out this, we are gonna get something like that. Okay, and when this thing is coming over here, I want this L should be gone. So let's press P4 position to create one keyframe at X, go few frame forward, and let's bring this from X over from here to here. Now what I want that these things should be gone along with that. So let's select those keyframe and hit F9. Okay, like that. Okay, then what I want is that somewhere around at this point I'll select my dish G. I'll press Ctrl Shift D to split this layer, and I'll make it apparent with this one. Okay, so it will be gone with this one. Then as it goes further, somewhere around at this point, I'll select this O. I'll press Ctrl Shift D to split this. I'll make it apparent with this one. Hit page down button few times. Select this O. Press Ctrl Shift D to split this layer. Make it apparent with this one. Hit page down button one time or two time, or let's bring this over here. Select this G. Press Ctrl Shift D again. Make it apparent with this one. Hit page down button two times. Select this E. Press Ctrl Shift D and make it apparent with this one. Okay, like that. So we are gonna get something like that. Now if you check it out this portion over here, we are gonna get something like that, and we'll get something like this. Now first we got this, then we got this. Now when it's going from this to this, what I want is that press Ctrl Y, and with the help of pickup choose this blue color and hit OK. Bring this over here, press P4 position, create one keyframe, go few frame forward, or you can go select this, hit Ctrl X, go inside this and hit Ctrl V, and let's bring this over here, press P4 position, and let's bring this over here. Press P4 position to create one keyframe, hit U, let's select this, hit U, select this, move this over here, press P4 position, go over here, and let's bring this properly at the center, select those keyframe and hit F9. So we are gonna get something like that. And when this is done, I'll hit N over here, and if I check it out this, I'm gonna get this animation continuously in the form of loop, like that. Now there should be some kind of a scaling animation over there. Let's enable the motion blur for this one. So right click new and create one null object and select all of them and make it apparent with this null. Select this null, press S, let's make this 110 to create one keyframe. Go to the last frame and let's make this value 100. Okay, like that. So this is just a random animation. There is nothing much more special about it. It's just a random thought that I got because today is more about Q&A. By the way, guys, if you have any queries, questions, any new stuff, please let me know in the comment sections, whether you want to know or you have any queries. Like this guy has asked his queries. Basically he what he did that he has shown me some video and he has asked me how to do it. So if you guys have any queries, questions, please feel free to ask in the comment sections. We will try to answer that as much as I can. Even if you have guys seen any new movies or if there is any movie recommendations, then you can ask me that.
Hello. Okay, let's see whether we can do something else or no. By the way, in my last live stream, I have shown one video. So, okay, there is one question by Arya Arina. Yeah, so I work in an agency, so I get SaaS project regularly. But even ChatGPT says you are underpaid, and also I felt. And of course, I try to find a similar type of a client, but I can't. So, any tips? I think you can go for mm, freelancing websites. Even I haven't tried it yet because I'm not much more into SaaS kind of a videos. Even I'm just a beginner, so I don't know much more about it. But if you want much more much more work for SaaS videos, you can try for Fiverr, Upwork, and all, or you can try to sell that services on LinkedIn as well, because SaaS kind of a videos most of the time, proper. It's not something like a low budget client can afford. Obviously, if someone wants SaaS kind of videos from you, they are definitely going to have that much budget. Okay, so yeah, and that kind of a client you can only find on LinkedIn, not on platforms like Instagram and all. So I would recommend you to create that kind of intro videos for yourself, just to showcase your work on on LinkedIn and any other platform like Behance, and try to get some gigs from Fiverr and all. So that's the only thing I can suggest, because there is no proper formula to find the clients. Okay, so yeah, I think these are the only things as I can suggest. But obviously there is going to be a more way. All you can do is just to find out and try. Okay, even if you want, then you can ask ChatGPT Cloud AI that how to find clients, which is something related to this subject. So yeah, that's going to be my answer. Why this is opening over here? Let me find out that video. Is that video? Okay, so yesterday I have shown one video, one of my old video to my subscribers. The one thing I forgot, that I forgot to you know remove the, I mean, enabling the voice. So let's see whether we can still show that video or not.
Okay, so because of copyright issues, obviously I cannot show that video over here. Also, guys, if you want to learn much more about motion graphics and other stuff, then don't forget to check out our Udemy courses as well. Link is available in the description, or you can just go on Udemy and search for AG Motion Designs. Okay, let's do one random animation, and then we'll call this quit. Okay, let's create one background and let's choose black color background like that. Let's select our text and let's type our text. Typography. Let's select this text. Tracking should be 0 like that, and paragraph should be center text, and press Ctrl Alt Home. Then go to the add menu, choose animate, and we are going to choose tracking. And let's increase this tracking amount something around like this. Let's make this value 100. Let's create one keyframe at the start, zoom in, and let's make this value around one somewhere around 115. Let's make this value 0, or even somewhere around negative, so it will come at the center. And then go around 3 seconds and hit Ctrl C, Ctrl V. Select those keyframe and hit F9. Go to the graph, select this graph. By holding shift, move this handle at this point and move this handle at this point. Okay, so if you check it out this now, we are going to get something like that. Now I want this animation to be in a continuous format, so I'll alt click on the stopwatch and I'm going to search for loop out expression. Okay, like that. So even after this, I'm going to get this animation continuously. Now let's select this, press P for position, go hit Ctrl D, select this second layer. In Y position I am going to type plus 200. So, or instead of plus 200, let's type plus 100 or something, so it will come downward like that. Okay, or I think instead of plus 100, let's type plus 150. Then again hit Ctrl D over here, let's type plus 150 again. Then select this topmost layer, hit Ctrl D, press P. Now over here let's type minus 150. Then again hit Ctrl D, press P. Let's go over here, let's type minus 150. Okay, like that, and hit U. Then zoom in, let's go somewhere around 5 frames. Select this, move this over here, and let's adjust this one by one. Okay, like that. Select all of this and hold alt open square bracket to trim up to this. Go to the start and let's move this over here. So obviously I'm gonna get this animation something like that. Now let's select all of this and press Ctrl Shift C, and I'm going to call it as animation and hit OK. And let's hide this. Then press Ctrl Y to create one solid background, and now I'm going to search for ramp effect and double click to apply. And over here I'm going to choose radial ramp, and let's bring this anchor point over here, and let's bring this anchor point over here, and let's swap this color. Now let's select this and press Ctrl Shift C to pre-compose, and we are going to call it as map. Move all attributes into new composition and hit OK, and we will hide this. Let's select this animation map, I mean animation text composition, and we are going to search for time displacement effect and double click to apply. And over here in search option, search for map, and let's choose quad resolution. So now if you are going to check it out, this your animation is going to look something like that. If you go inside this map and if you swap these colors, and now if you check it out, this we are going to get something like that, this weird typography effect. Now in this map, right click, new, and create one adjustment layer and search for mosaic effect and double click to apply, and let's make this value 30, also this one 30. Okay, and now if I check it out, this I'm gonna get this kind of an animation like this. Okay, and obviously if you go inside this and if you swap these colors, you will get this animation in complete different direction.
Okay, now I'm going to select these both layers and press Ctrl Shift C, and let's call it as text animation. Then hit Ctrl D around 5 times to get 5 copies. Go to the effect and presets panel and search for fill effect. Double click to apply. On fourth layer, apply fill effect. Choose green color. On third layer, apply fill effect and choose blue color. On second layer, apply find edge effect and double click and choose inverted like that, and go to the start. Then hit page down button 2 times. Select this, move this over here again 2 times, move this over here again 2 times, again 2 times. Okay, so we are going to get something like that. Select last 3 layers, press F4 and choose blending mode screen. सर उसी वीडियो में एक और डाउट है, at 5 second you can see building image where grid is moving. How can I create this in After Effects? Let me check it out. क्या है वो, मैंने देखा नहीं. Around 5 second पे grid is moving. पाँच सेकंड पे कोई ग्रिड तो मूव नहीं हो रही दिख रही मुझे. Bro, is there any way we can save as preset complex motion graphic or special effect which I saved so that I can use it, or any text or layer? I think we can. Yes, I think yes we can, but I don't know much more about it because I never did. Most of the time I rely on plugins and any effects. Even in 2026 there are a lot of inbuilt plugins, so I don't know much more about it. I'll check it out and will come back to you. मैं फिर से exploited हो गया, मुझसे 36 वीडियोस बनी. It requires me to make a multiple Gmail account to make them by Flow AI. Needed ChatGPT to go. Edited them all in After Effects and got only 7k. 7k money or views. Now you are not a beginner. Thank you. Bhai, can you guide me? Where is your studio? Have you ever worked in studio, bhai? I don't work in a studio. I work in a marketing agency. Obviously, I cannot name it over here. Uh, but yeah, सर काफ़ी काम फ्रेम के लिए है बट मूव हो रही है. If you open video in After Effects, you can see that. I cannot. Are you sure it's on 5 second? मैं थोड़ा स्लो करके देखता हूँ वीडियो को. I think you are getting underpaid for that much amount of work. So yeah. आई थिंक आप वो वीडियो बिल्डिंग के ऊपर जो ग्रेड्स ऐसे ऊपर नीचे हो रही है उसके बारे में मैं बात कर रहे हो क्या, मंकी?
ग्लफेज, लेट मी पुट दैट स्क्रीनशॉट। मैं अभी थोड़ा एक स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, आप जल्दी से देख के बता दो मुझे, क्या आप इसके बारे में बात कर रहे हो क्या? अच्छा, उसी के बाद बेसिकली वो आफ्टर इफेक्ट्स में नहीं बनता ब्रो। उसके लिए आपको सिनेमा 4D या ब्लेंडर की मदद लेनी पड़ेगी, या फिर आपको कोई तो वीडियो उठाना पड़ेगा और उसको थोड़ा 3D मैपिंग और ये सब करना पड़ेगा। अभी ये जिसने बनाया होगा उसने तो स्टॉक फुटेज ही यूज़ की है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन बाय चांस अगर आपको कोई बनाना होगा तो आपको सिनेमा 4D या 3D सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा उसके लिए। और अगर आफ्टर इफेक्ट्स में बनाना है तो प्लेक्सस करके एक प्लगइन आता है, आपको वो यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन मैंने कभी पर्सनली किया नहीं है। उस तरीके की डिज़ाइन को प्लेक्सस बोलते हैं, तो आपको वो प्लगइन यूज़ करना पड़ेगा, या फिर ट्रैप कोड के जो प्लगइन्स होते हैं फॉर्म पर्टिकुलर, उसमें आपको देना पड़ेगा। ओके। कॉर्पोरेट जॉब हमेशा एडवांटेज लेता है सर, इमेज के ऊपर ग्रिड करना बस। नहीं, वो इमेज के ऊपर ग्रिड नहीं किया है, उसको प्रॉपर मोशन ट्रैकिंग की मदद से उसको प्रॉपर्ली मूव किया है। आफ्टर इफेक्ट्स में उस तरीके का एनिमेशन नहीं होगा, 2D में होगा, और जो आप मुझे बता रहे हो वो थोड़ा 3D एनिमेशन है, तो वो आफ्टर इफेक्ट्स में नहीं होगा। वो आपको 3D सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा उसके लिए। कॉर्पोरेट जॉब हमेशा एडवांटेज रहता है, ऐसा नहीं है, कभी कभार अगर कुछ एग्जांपल होंगे तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर दैट, बट हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है ये सब। प्लगइन बाय हर चीज़ का होता है क्या? हर चीज़ का तो नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सॉफ्टवेयर नहीं कर पाता, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सॉफ्टवेयर बहुत देर से करता है, यानी उसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता है, तो उस टाइम पे हमें प्लगइन यूज़ करना ही पड़ता है। सो या प्लगइन हर चीज़ नहीं कर पाता ऑब्वियसली, क्योंकि कुछ चीज़ों में बिकॉज़ हर चीज़ प्लगइन कर देगा तो सब प्लगइन से यूज़ करेंगे, सॉफ्टवेयर कौन यूज़ करेगा? भाई प्रीमियर प्रो भी करते हो क्या? यस, प्रीमियर प्रो मैं करता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा जो भी काम है वो आफ्टर इफेक्ट्स में बन जाता है। प्रीमियर प्रो मैं तभी यूज़ करता हूँ जब मुझे किसी वीडियो में हेवीली सिर्फ़ और सिर्फ़ वीडियो पे काम करना है, उसमें कोई मोशन ग्राफिक्स इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सर अगर वो पार्ट स्किप कर दो चलेगा, आई जस्ट कॉपिंग माय पोर्टफोलियो फ्रॉम यूट्यूब। हाँ, आप उसकी जगह कोई और अच्छा एनिमेशन भी डाल सकते हो। भाई प्लगइन कौन-कौन सी चीज़ में ट्राई करूँ? लिख लेता हूँ, बताओ। कौन-कौन सी चीज़ में ट्राई करूँ? ऐसा मतलब मेरे पास कोई इसका जवाब तो नहीं है कि कौन-कौन सी चीज़ों में ट्राई करूँ, लेकिन कुछ प्लगइन्स हैं जो आप चेकआउट कर सकते हो। मैं चाहे तो यहाँ पे नाम लिख के देता हूँ। ये तो हो गया। एनिमेशन कंपोज़र आई थिंक ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता ही है, तो उसके बारे में बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब अच्छा प्लगइन है, ऑलमोस्ट सबको पता है, लेकिन एनिमेशन कंपोज़र में भी अभी और भी सारी चीज़ें आई हैं, तो वो यूज़ करो। अगर आपको लगता है कि आपको कैरेक्टर एनिमेशन में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो ड्यूक बेसल करके होता था, लेकिन आई थिंक अभी उसका नाम ड्यूक एंजेला करके है, तो वो प्लगइन आप ट्राई कर सकते हो। इसमें होता ये है कि क्या बोलते हैं, कैरेक्टर एनिमेशन, ये बेसिकली रिगिंग होती है इसमें, तो आप वो ट्राई कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको सेम कैरेक्टर मैं यहाँ पे कैटेगराइज कर देता हूँ चाहे तो, कैरेक्टर एनिमेशन, ड्यूक एंजेला करके एक प्लगइन है, मोस्टली यूज़ करते हैं रिगिंग के लिए। उसके बाद उसी से यानी कैरेक्टर एनिमेशन से ही रिलेटेड एक प्लगइन है रबर हाउस करके, आप वो यूज़ कर सकते हो। ये बेसिकली हेलो सर, हेलो, जो किया है मैंने, हाँ, तो आप रबर हाउस भी ट्राई करो, रबर हाउस भी बहुत सही प्लगइन है। मैंने पहले यूज़ करता था, लेकिन अभी मैं उतना कैरेक्टर एनिमेशन में नहीं हूँ, तो मैं उतना यूज़ नहीं कर सकता। तो हाँ, वो एक है। उसके बाद आपको अगर सिमुलेशंस, आपको लगता है कि आपको थोड़ा फिज़िक्स ड्रिवन चीज़ें ट्राई करनी है, जिसमें थोड़ा फिज़िक्स हो या फिर सिमुलेशंस हो, तो न्यूटन करके एक प्लगइन है, वो आप ट्राई कर सकते हो। बेसिकली इसमें क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, उसको आप ग्रेविटी दे सकते हो, तो वो ऐसे ही एडजस्ट कर, फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास वो प्लगइन है नहीं, लेकिन आप अगर कभी ट्राई करो तो आप ट्राई कर सकते हो। बेसिकली सपोज़ मान लो कि मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है,
ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे बना के रखा है एक ऐसा बेस। तो अगर मैं वो प्लगइन इस पे अप्लाई कर दूंगा और इसको मैं एज अ ग्राउंड ट्रीट करूंगा, तो वो इस पे वैसे ही गिरेगा जैसे रियल लाइफ में कोई भी चीज़ गिरती है। सर कैरेक्टर एनिमेशन तो बिना प्लगइन के हाँ हो जाता है, लेकिन आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि प्लगइन्स का इस्तेमाल ही इसलिए किया जाता है ताकि हम जो नॉर्मल चीज़ें सॉफ्टवेयर में करें वो थोड़ा कम टाइम में करें और अच्छे से करें। तो वो जो चीज़ है वो इसलिए यूज़ की जाती है ताकि आपका जो काम है वो ईजी हो। ठीक है। तो न्यूटन एक प्लगइन है, उसके बाद ऑब्वियसली अभी जो मैंने रिसेंटली बोला प्लेक्सस करके है, वो बेसिकली क्या करता है कि ग्रिड टाइप के एनिमेशंस बनाता है, तो उसके लिए सही है। उसके बाद ट्रैप कोड करके एक प्लगइन है जो बेसिकली सिमुलेशंस क्रिएट कर रहा है, मोस्टली पार्टिकल सिमुलेशंस जो होते हैं वो यूज़ करता है। ठीक है। अभी भाई नोटपैड फिर से शो करिए। हाँ ये देखो ला के रखा है मैंने स्क्रीन पे। भाई क्रैक यूज करो ना, बट ट्रस्टेड वेबसाइट डाउनलोड करना। वो तो अभी मैं ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं बता सकता। ठीक है, और कौन से प्लगइन्स हैं जो मैंने यूज़ किए हैं? मोशन टूल करके है एक प्लगइन, आई डोंट नो आप लोगों ने यूज़ किया है कि नहीं। बेसिकली जो भी ग्राफ एडिटर्स होते हैं और ये सब वो यहाँ पे आ जाते हैं। और भी छोटे मोटे स्क्रिप्ट्स है जो मैंने यूज़ किए हैं। तो वो सब है। आप बता रहे हो या ये सारे प्लगइन्स फ्री है क्या? नहीं, आई डोंट थिंक इसमें बहुत सारे प्लगइन्स पेड है। आई थिंक ट्रैप कोड, प्लेक्सस, न्यूटन ये पेड है। ड्यूक एंजिला फ्री है, रबर हाउस भी पेड है। आई थिंक मोशन टूल भी पेड है। सर मेरे पास ट्रैप कोड है, क्या उससे ग्रिड बना बना जाएगा? यस, उससे ग्रिड बना सकते हो आई थिंक, लेकिन आपको कोई तो ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा। मैंने अभी तक उसमें नहीं बनाया है। आप जो बोल रहे हो वो मुझे सिनेमा 4D में आता है, लेकिन अभी मेरे पास सिनेमा 4D है नहीं और मेरी उतनी अभी तक वो प्रैक्टिस नहीं है कि मैं उसे प्रॉपरली यहाँ पे जस्टिस दे पाऊँ जो आप करना चाहते हो। ठीक है। तो यस, वो है मोशन टूल करके है। और कौन सा प्लगइन अभी मुझे इतना याद नहीं आ रहा। एक मिनट रुको। गाइस प्लीज डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन दैट लाइक बटन, दैट्स रियली रियली इम्पोर्टेंट। और सब्सक्राइब भी कर देना। ड्यूक तो फ्री है, हॉर्स वाया आइकॉन है उसका, बट भाई उसमें रिगिंग कौन सी की बड़ी टफ है। ये फिर से करूँगा ट्राई। यस, उसमें रिगिंग की कॉन्सेप्ट भी टफ तो है, लेकिन मैं उसले मोस्टली तभी बहुत स्टार्ट में यूज़ करता था जब मैंने स्टार्ट किया था। अभी अगर मुझे कभी कैरेक्टर एनिमेशन करना हो तो मैं तो यू नो मैन्युअली ही करना प्रेफ़र करता हूँ खुद से। कोई प्लगइन्स नहीं यूज़ करता बिकॉज़ मुझे अभी उस चीज़ की इतनी आदत नहीं है। लेकिन मैंने देखा है बहुत लोगों को वो प्लगइन यूज़ करना करते हुए, और अभी हमारा जस्ट बिकॉज़ टॉपिक चल रहा था तो मैंने बताया कि वो एक प्लगइन होता है। भैया जियो लेयर भी भूल गए। मैंने जियो लेयर यूज़ नहीं किया है ऑनेस्टली, इसलिए मैं वही प्लगइन बता रहा हूँ जो मैंने यूज़ किए हैं। बिकॉज़ देखो कैसे रहता है पता है, जस्ट बिकॉज़ मैं सिखा रहा हूँ इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे सब याद हो। मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ जो पर्सनली मैंने यूज़ की है। तो हाँ, जैसे कि आपने अभी सैस एक्सप्लेनर एनिमेशन का बोला तो मैंने इसलिए बोला कि अ, मुझे उतना उसमें एक्सपीरियंस नहीं है। मैं अभी तक उसमें बहुत ही मतलब बिगिनर लेवल पे हूँ। तो इसलिए तो ये जो प्लगइन्स जो मैंने बता रहा है के हैं वो मैंने यूज़ किए हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर क्लाइंट प्रोजेक्ट में यूज़ किए हैं, कुछ जस्ट बिकॉज़ मुझे कुछ शो रील बनानी थी और ये सब तो उसके लिए यूज़ किए हैं। आई थिंक अगर किसी को रबर हाउस देखना है तो मैंने जो पुरानी कैरेक्टर एनिमेशंस की शो रील बना रखी थी, चाहे तो मैं यहाँ पे रन करता हूँ वो शो रील। लेकिन ये होगा कि उसका ऑडियो नहीं होगा बिकॉज़ आई थिंक मैंने बहुत टू आई थिंक 2020 के अराउंड बनाई थी, तो उस टाइम पे मुझे उतना कॉपीराइट क्लेम्स के बारे में उतना पता नहीं था। तो आई थिंक उसमें कॉपीराइट क्लेम आ चुका है तो वो वीडियो मोनेटाइज नहीं है। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ।
क्या है। ठीक है, वो वीडियो में यहाँ पर रन कर रहा हूँ। आप इसमें देख सकते हो। इसमें कैरेक्टर के प्लगइन्स मैंने यूज़ किया, ड्यूक एंजिला एंड ऑल। आप ये तो मैंने मैन्युअली किया है, ये भी इलस्ट्रेटर और आफ्टर इफेक्ट्स। ये जो एनिमेशन है आपको दिख रहा है, ये रबर हाउस की मदद से किया हुआ है। बेसिकली ये तो इलस्ट्रेशन है, लेकिन ये जो इसके डंडे हैं ये सब मैंने रबर हाउस से बनाए के रखे हैं। भाई अब रोटो न्यू वर्जन आ गया है, मतलब रोटो क्या ऑटोमेटिक होगा, हो सकता है, बिकॉज प्रीमियर प्रो में तो अभी आ चुका है, यानी आफ्टर इफेक्ट्स में भी। अच्छी बात है हम हमारे लिए। ये जो है ये रबर हाउस में किया है मैंने। ये जो है ये रनिंग एनिमेशन ये मैंने ड्यूक बेसल यूज़ करके किया है। ये भी वही सेम चीज़। ये मैंने नॉर्मल एनिमेशन है, इसमें कोई प्लगइन नहीं है। ये भी, इसमें भी कोई प्लगइन नहीं है। इसमें मैंने रबर हाउस यूज़ किया है। ये भी नॉर्मल एनिमेशन है, इसमें रबर हाउस यूज़ किया गया है। ये नॉर्मल वेक्टर फाइल एनिमेट किया है। ये भी नॉर्मल एनिमेशन। ये भी नॉर्मल एनिमेशन। ये भी नॉर्मल है। आई थिंक इसमें मैंने रबर हाउस यूज़ किया होगा। ये भी नॉर्मल एनिमेशंस। ये तो नॉर्मल वेक्टर एनिमेशन है। ये भी नॉर्मल वेक्टर एनिमेशन है। इसमें रबर हाउस है, वेक्टर, नॉर्मल एनिमेशन, नथिंग न्यू, रबर हाउस। ये एडोबी फ्लैश में किया गया था। दैट्स इट। सो आप देख सकते हैं कि कैसे कैरेक्टर एनिमेशन आप मैन्युअल भी कर सकते हो, ड्यूक बेसल, ड्यूक एंजेला। आप बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यूज़ करके भी रिजल्ट ला सकते हो। बाई कॉइन उठा एंड पलट के पीछे लोगो था, वो इफेक्ट देखा देखा था। अच्छा। अच्छा, पता नहीं भाई। ओके, तो ये तो क्लोज कर देते हैं। सो हाँ, आई थिंक मैंने तो मोस्टली इतने ही यूज़ किए हैं, इसके अलावा कुछ होगा तो मुझे पता नहीं। एंड थैंक्स फॉर योर लेसन्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लेसन्स बाय द वे, एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। पीजेन में भाई पपेट रैप किया है क्या? नहीं, पिजन वाला जो था, आई थिंक जो ऐसे रोटेट करता है, वो मोस्टली मैंने शेप टूल शेप्स जो थे वो एडजस्ट करके किया था, तो उसमें उतना तो कुछ था नहीं। फ्लैश में पहले करता था, अभी नहीं करता। अभी मैं मोस्टली मैं फ्लैश में तब यूज़ किया करता था जब मैं आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ नहीं करता था, तो तब मुझे अच्छा लगता था एडोबी फ्लैश, लेकिन अभी उसमें उतना कुछ है नहीं। और आई थिंक सॉफ्टवेयर भी अभी वो उतना डेवलप नहीं कर रहे हैं। सो या, ओके, तो हम कुछ बना रहे थे। हाँ, तो ये बनाया था मैंने। इन सबको स्टार्ट में लेके आता हूँ मैं। रीजन में मैंने शेप टूल से ही एडजस्ट किया थे शेप्स, उसमें उतना कुछ खास तो नहीं था। ओके, तो ये ऑब्वियसली इसमें ग्लिच इफेक्ट है, तो ये लोड लेगा। लास्ट के 3 लेयर्स को मैंने ग्लिच कर दिया है। अब मुझे देखना है कि ये एनिमेशन लूप में चलता है या नहीं। कंट्रोल आर, एक लाइन यहाँ पे ला के रख देते हैं। मुझे पता है कि मेरा एनिमेशन जो है वो 3 सेकंड पे आई थिंक लूपेबल फॉर्मेट में होगा। एन प्रेस करके देखते हैं कि नहीं, कि यहाँ पे लूप में नहीं है। हाँ, अभी कार्टून के लिए अच्छा है वो, लेकिन द थिंग इज़ कि आई एम मच मोर इनटू मोशन ग्राफिक्स, सो मेरा उतना यूज़ नहीं है उसमें। जो मुझे टूल्स चाहिए, बिकॉज मैं एज अ मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट, आपका मोस्ट ऑफ द वर्क वीडियो से रिलेटेड रहता है। वीडियो के ऊपर आपको रील्स बनानी है, उसका टेक्स्ट एडजस्ट करने हैं, तो उस टूल का मुझे उतना यूज़ नहीं है जितना एक प्रॉपर जो 2D एनिमेटर होता है, जो प्रॉपर स्टूडियोज़ में काम करते हैं, प्रॉपर ड्राइंग्स करके एनिमेशन करते हैं, उनके लिए वो ज़्यादा यूज़फुल है।
मेरे लिए वो इतना यूज़फुल नहीं है, तो मैं उसे यूज़ नहीं करता अपने वर्क फ्लो में। यस, मैंने अपने चैनल पे मोशन ग्राफिक्स की ट्यूटोरियल्स डाल रखे हैं। अगर आपको देखना है तो आपको सिंपली ये करना होगा कि सिंपली मेरा चैनल ओपन करो, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको वीडियोस में जाना है, और यहाँ पे लेटेस्ट की जगह ओल्डेस्ट डालना है। और आपको स्टार्ट में, जब मेरा चैनल 5 ईयर्स एगो, आप देख सकते हो मेरे चैनल पे शो रील्स और ये सब भरी पड़ी है, तो आप वहाँ पे डाल सकते हो। और आई थिंक अगर आप प्लेलिस्ट पे जाओगे, यहाँ पे सिंपली प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाओ, और यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट तो चीज़ दिखेंगी ही, लेकिन अगर आप पोर्टफोलियो में जाओगे तो आपको ऑलमोस्ट सारी जो मेरी शो रील्स है वो प्लेलिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी, जितने मेरे शो रील्स है और ये सब। ठीक है, तो बस ये सिंपल एक्सरसाइज करनी है और आपको मिल जाएगा। भाई दिल्ली से हो क्या? नो, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, मुंबई। आप कार्टून भी बनाते थे क्या भाई एडोब एनिमेट पे? जैसा कि मैंने कहा, मैं पहले बनाता था। अगर आपको देखना है तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको कि मैंने एडोब एनिमेट में क्या किया है। मैं यहीं पे दिखा देता हूँ। उस दिन भी मैंने वीडियो दिखाया था, बट द थिंग इज़ कि एट दैट टाइम आई फॉरगॉट टू इनेबल द वॉइस। सो मैं वो दिखा देता हूँ आपको। आप लोग वो देख लेना, आपको मज़ा आएगा। मैंने उस दिन दिखाया था, जस्ट इन्जॉय। मैं अभी दिखाता हूँ आपको। बस मुझे अपना डेस्कटॉप ऑडियो इनेबल करना होगा, और खुद खुद को ऑडियो में। ओके, तो अभी मैं एक वीडियो रन कर रहा हूँ, जो मैंने एडोब एनिमेट पे किया था। ये वीडियो मैंने आई थिंक अराउंड 5 to 6 ईयर्स अगो ये वीडियो मैंने एडोब एनिमेट पे बनाया था। ठीक है, तो अब मैं खुद का माइक ऑफ कर रहा हूँ, और ये वाला माइक मैं ऑन कर देता हूँ। ठीक है, डेस्कटॉप ऑडियो मैंने ऑन रखा है, और मैं खुद का माइक म्यूट म्यूट कर।
Okay, guys, so how was that animation? Please let me know in the comment sections. Let me enable my comment sections. Where is my comment sections? Let me bring this over here. Sorry, guys, let me bring my comment sections in my second tab. By mistake, I have closed it. Oh, shit. What is this? This is so cool because you made this in After Effects and better than One Punch Man Mass. uh okay, so thank you so much for the comments, but the thing is that I haven't did this animation in After Effects. The only thing I did in After Effects is to add those fiery effects and all. This animation what you have seen, I did this in when I was in my college somewhere around 2018. There was our assignment that at that time I used to do so many things in Adobe Flash. So all the animation have you seen over here was on Adobe Flash. It was not in After Effects. The only thing in After Effects is that fiery effect and all. And most of the animations I did in Adobe Animate only. And for the sound effects I use Premiere Pro, and editing I have used Premiere Pro. Yeah, so yep, this is like that only. Is there anything we can do today? This myself was here. Okay, so I think this much is enough. This animation is also ready. Also, I am feeling a little bit sleepy, so I need to sleep.
I need to sleep as well. Okay. So yep, thank you. Let's sum up this live stream and we'll meet again after a few days. Because I'm going to take a game break, but still better than One Punch Man season 3. I don't know what is One Punch Man season. So yeah. So yep, thank you so much for watching this live stream, and those who have subscribed to this channel, thank you so much for making this channel a successful YouTube channel. This 50K subscribers, I don't know, that number is not that much big as compared to other channels, but still it means a lot to me because it um, I took a lot of efforts to create this video and to run this channel even after doing a job, freelancing and all. So yeah, those who are watching this live stream, thank you so much for supporting. So yep, that's it for today, and thank you so much for watching this live stream. Bye bye.